I show the offer letter also. You send me that offer letter. I was so happy when I saw your offer letter because it's also my achievement. My candidate got Obviously, selected. sir. Yeah, Obviously, was obviously, I also did obviously. hard work. Suddenly daily wake up on 6 o'clock and then prepare for the interview, the session, and then conduct session daily. So I also need to do preparation for that. And if any candidate like you got selected now, I'm so become so happy अरे, for that. So thank you for giving me that opportunity to sir, thank you so introduce much to you you as as well. a a person who got selected by following my 7 days session. Okay, Apurva. So congratulations for your selection. Thank you so much, sir. I have some question for you to clarify the viewers who watching our video and watched your mock interview also. So I have some question. I'll repeat one by one. Introduction. I will not go with introduction because you already introduced yourself well in your mock interview. Okay. So I just want to when you joined my 7 day session and what was your initial knowledge level on that time before joining? Okay, okay. So, sir, when I joined your 7 day session, I was hesitating, right? As you know, my introduction was not very nice, right? You said me that, Apoor, you have to work on your hesitation. You could not hesitate in front of interviewer, right? So I and you also worked very hard on my communication as well, and then it eventually become better day after day, and also there was a lot of support by you, as I say, and everyone will say this, right? Everyone who has taken your class always say this, that you always supported everyone in the morning, waking up early, calling me, Apoor, get up, now it's time to take the class. So that was very grateful time, right? And of course there was a lot of support, our hard work. This is the result of our hard work. And I will say that anyone who will attend your 7 days class, so right, it will be a great experience for him, right? Because he get a lot of improvement through it. After I don't know, I have not tell you, but I have cracked 3 interviews, right? I have cracked 3 interviews. So this was the one which I selected, because I have to travel across the India. I have to travel across India in this profession. So I selected this. Yes, Okay. and due to the 7 days workshop, I I established that skill. That helped me really a lot. Well, okay. So which day, which topic helped you the most? Okay, so basically, in 7 days class, our focus was on HCL, right? Our focus was on HCL. But the thing was that one thing you told me that Apoor, keep on looking other job profession also, right? There are more companies, there are more opportunities. Do not be Yes. dependent on only one company, right? So this thing which I marked in my mind, I said, yeah, we should apply on different companies also. Then I applied, and eventually the things happen. Eventually things happen. Okay, Uh, one more question. What was your biggest confusion before joining the class? सर इस सवाल का जवाब मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, इसलिए सर क्योंकि जितने व्यूअर्स हैं ना वो देख करके थोड़ा उनको एक आउटपुट मिल जाए। जब मैं सबसे पहले आपका क्लास देखा था तो मुझे ये लगा था, पहले सबसे पहले मैंने आपका देखा, सब कुछ देखा, फिर मैंने आपको मेल किया। जब आपके जो प्राइसेस होते हैं मैंने देखा, तो मैंने सबसे पहले सवाल है, सच में ये चीज़ काम देगी, ये वाकई काम देगी, ये सवाल सबसे पहले मन में आता है। लेकिन जितने भी व्यूअर्स आपके देखेंगे मैं उनको कहूंगा, हाँ भाई बिल्कुल काम देती है। आप आंखें बंद करके सर को सब्सक्राइब करें, सर को लाइक करें और सर के को अटेंड करें। आपको कहीं ना कहीं जॉब, बस जरूरत ये है कि सर आपको पूरा गाइड करेंगे, आप पूरी मेहनत करें अपनी। जब आप पूरी मेहनत करते तो उसका रिजल्ट आता ही है। यही मैं था, यही सर थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बस कहीं एक बार हो जाए, और उसके बाद से मेरा 3 इंटरव्यू निकला। तो इवेंचुअली बस यही है कि सर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप अपनी मेहनत करते रहें, Yes, राइट? yes, yes. Okay, तो पूरा पूरा परिणाम निकलता है। great. Now comes with your interview experience. So, first of all, which company uh, you got selected? Okay, I applied in 6 companies altogether. I was shortlisted in 4 companies. I give interview for 3 companies. Two were startups and one is Jaipuriya school. Right. So I was offered 3 LPA. Right. Offered 3 LPA from 3 of them. Right.
But the thing was that I choose Infobay.ai. It's a AI startup which works Mm. on data, Mm. right? It used to sell and purchase data. So I choose this profession because in this profession I have the benefit I could travel all over the India, Mm. right? Where the destination is, and company will bear the cost of my travel. So I choose this profession. Very Right. good. My interview experience was that, sir, when I appeared for the interview, first thing they used to see your communication. So जो इंट्रोडक्शन का सर पार्ट होता है वो मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूंगा, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने कई वीडियोस में बताया है, आपके इंट्रोडक्शन के बाहर कहीं नहीं पूछा जा सकता। आप जो इंट्रोडक्शन में बताओगे, जो आपके रिज्यूम में लिखा होगा, वही पूछा जाएगा आपसे। Yes. तो मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ जैसा कि मैं आपकी ऑडियंस को बता देता हूँ, मैं इंग्यूनल हार्निया ऑपरेटेड हूँ, राइट। मेरी सर्जरी हुई थी, मैंने सर से इस बारे में पूछा कि सर मैं इसको कैसे बताऊं एचआर को, राइट। मेरे पास सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, राइट, और 6 मंथ के एक्सपीरियंस को कंसिडर भी नहीं करते बहुत सी कंपनीज। सर मैं इसको कैसे बताऊं? सर ने बोला नो प्रॉब्लम, आप जो है उसको ऑनेस्टली रखिए एचआर के सामने और एचआर उसका जवाब आपको देगा। तो मैंने वैसे ही अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बताया इंजूनियर हार्निया ऑपरेटेड हर एक चीज। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड हुआ, जहां आपका टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोर्स मेरे काम आया, राइट। सो सर 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसे थे, राइट। एचसीएल में वो सर्विस डेस्क की जॉब थी भी नहीं, पर 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो टेक्निकल राउंड में पूछे गए थे। पहला माइक्रोसॉफ्ट 365, राइट, ये पूछा गया था सर, और ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया कि अरे ये क्वेश्चन आया था, राइट। उसके बाद सर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, Mm. BSOD. blue screen of death. Basic technical knowledge. And third thing is that, okay, Apur, so you are working with your employees and suddenly you get a problem, right? Your computer is not working. What will you do? अरे अब उसके बाद मैंने कहा ये तो सर ने पढ़ाया था, ये तो 3 ही क्वेश्चन आ गए थे। तो वो 3 क्वेश्चन फंस गए थे, वो भी सर्विस डेस्क का ना होते हुए 3 क्वेश्चन फंस गए थे। तो ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। Very good. I'm so happy that you got selected. You actually you did hard work. Yeah, of course. I also did. I trained you, but you did. You gave your 100%. Okay. You prepared what I taught you. Then that's the very good thing. And congratulations for that. Congratulations for your success. Okay, for your hard थैंक work. यू, Okay. थैंक यू सो मच Then सर। okay. Tell me how many rounds, interview rounds were there? Okay, sir. Sir, there were 3 interview rounds, Mhm. right? First was HR round, second was marketing round, and third was last round, which was basically a basic knowledge of technical as well as scenario based question were there. So basically, sir, I used to prepare. Of course, you have taught me. So 2 rounds are very easy. Communication round was very easy. Mhm. Technical round was very easy. Marketing round, I saw some YouTube videos, scenario based videos, and then I tackled that round, right? So these were the 3 rounds So of you said interview. Yeah. you it was I think a scenario based question. So which type of question they asked in scenario based? Okay, sir. So, according to the job profile, scenario-based question was that, Apurv, for example, you are managing the project completely, right? Now, you have to work done. For example, you have to have 1 lakh ACE laptops, right? You Mhm. have data of 1 lakh ACE laptop, but in 3 hours, you have to collect 5 lakh data of ACE, right? Then how you will manage the complete project? How will you hire freshers? How will you do all the things? Then I told them I will generate a marketing budget. I will use as Google Ads, as well as I will hire freshers, give them some basic amount of rupees, and then ask them. Then this type of scenario-based question was there, right? And they asked me KPI, that is key performance indicator. Again, you taught me about KPI, right? So Yes. KPI भी फंस गया वहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो आई टेल आई विल मेजर अबाउट की परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत सर्विस डेस्क का जो चीज़ थी वो काम आ गई वहाँ पे मार्केटिंग वाली में। Of और course. What? कम्युनिकेशन तो सर बहुत ही ज़्यादा काम आया। Okay. इंट्रोडक्शन वाज द बेस्ट। That's great. That's great. So tell me one more thing. Which part of the interview, sorry, which part of the training was most useful for you to achieve this job? ओके, You said सो यू already. सर, You said already introduction. A part of introduction. Sir, basically, I think sir, whole 7 days workshop is very useful, right? Because the thing is that na, you sometimes fear of interviews. You have a fear of interview, right? In salary negotiation, you taught me like negotiate ही नहीं करना है। आपको 1 लाख भी कम नहीं करना है। अगर वो मना माने तो नहीं नहीं एग्री करना है, right? So there were companies who were offering me 2.4 lakhs, 2.5 lakhs. I straightforward said no, I will not. No, no. This was the reason. That's why, because you need to be very frank in your negotiation. Like
जितना चाहिए उतना तो जितना ऐसा नहीं भी कि हम 6 लाख 8 लाख मांग लिए तो मिले ही ना. So at least you should get the amount which you deserve. Correct. Absolutely, sir. Absolutely. But one thing I want to tell you that have been hired as a fresher, right? Hmm. Because I was very honest. I tell them that I've been surgeried and all those things. So they told me, right, Apur, you have only 6 months of experience. So we will not able to consider your experience, but we will get you a job as a fresher, right? You can learn over here. So I am hired currently as a fresher only. So right. So according to as a fresher, they were offering me right. I was not able to negotiate that. So they were offering me right. I am hired as a fresher right now. So this is the thing. Great, great. बट बट एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि देखिए अगर आप लोग ये देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मतलब इतनी बड़ी भी कुछ खास कमाल नहीं हुआ है ये वो तो मैं बता दूं अभी तो सिर्फ शुरुआत है ये अभी तो सर के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे सर के फॉलोअर भी बढ़ेंगे और हम लोगों की भी सक्सेस बढ़ेगी अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है ये Yes, तो yes. अभी से भी आपको शुरुआत ही है Correct, 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 Apurva. If you will do hard work, you will definitely get, so many achievements. I know you will get that. You are a hard working person, so no doubt in that because I saw you when you joined my session. You followed all the instruction, all the things. Then that shows that yeah, you are a hard working person. Okay, so it's a closing motivation question. Like one mistake that fresher make during service desk interview. Just tell any one mistake. Which Okay, sir. Sir, one mistake that freshers do during service desk interview question, right? the first thing I know, uh, they did not subscribe my channel, so that's the first one. You need to tell another. तो ये आप बहुत बड़ी आपके व्यूअर्स को बता दूं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप ऐसा मत करें सर को सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर देखें क्योंकि सर को आप देख के जाएंगे तो आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो आप जरूर देख के जाएं सर को Next, so now you one can mistake, sir. So one mistake, sir, that freshers do, right? So I think they should always learn about job description, right? अब जैसे सर कई वीडियोस में आपने बताया है कि जब आपकी हॉबीज पूछी जाती है tell. तो आप क्या बताते हैं माय हॉबीज इज टू प्ले गिटार Hmm. टू प्ले फुटबॉल तो उसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं ना आपकी Hmm. पर्सनल हॉबी कुछ भी हो अभी एक वीडियो में सर ने बताया था जो मैंने सर आपने ध्यान दिया होगा जब भी मैं आपका इंटरव्यू देता था सॉरी इंट्रोडक्शन देता था तब मैं आपको हमेशा अपनी हॉबी में बताता था कस्टमर इंटरेक्शन कस्टमर Yes, yes. ऑल तो ऐसा कोई हॉबी नहीं होती किसी की Hmm. बट बताने में क्या जाता है राइट सो यही मैं कहता हूँ कि आपको जब भी अपनी हॉबी बतानी है तो आप हॉबी बताइए वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अलॉन्ग हो ताकि इंटरव्यूअर को उससे प्रॉफिट निकले राइट सो वो अलाइन करना चाहिए तो ये एक मिस्टेक मत करें ये मेरी एडवाइस है Good, very good. जितना हो सके इंट्रोडक्शन को जॉब बेस्ड रखें कि वो जॉब के उस पे पर्पस पे काम आए आपकी हॉबीज जो है वो जॉब के उस पे काम आए राइट तो Okay. ये है मेरी एडवाइस है Now, the last one is what would you tell someone who thinks like 7 days is not enough for the service desk preparation? सो लेट मी टेल यू वन थिंग ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ 7 डेज ही सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है आप ऐसा ना समझें उसके बाद भी सर सपोर्ट करते हैं आप उनसे कुछ भी पूछेंगे वो आपको बताएंगे और कुछ भी वो ऐसा बिल्कुल नहीं है और 7 डेज में जो होता है देखिए आप सर्विस डेस्क के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो 7 डेज में सर आपको सर्विस डेस्क का निचोड़ दे देंगे राइट वो निचोड़ दे देंगे आपके इंट्रोडक्शन से लेके बीजीवी तक सब कुछ आपको दे देंगे बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन Yes. इट राइट मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत कमी थी राइट मेरा इंट्रोडक्शन इतना हेजिटेटिंग था कि मैं और सर ही जानते कितना हेजिटेटिंग था लेकिन सर ने से वही चीज की कि आप पूरी यू हैव टू परफेक्ट इट सर एक दिन कहते हैं मैं अगले दिन बेटर करके आता है इंट्रोडक्शन अपना तो बस Yes. वही Yes. चीज आपको हार्डवर्क करना है एंड 7 डेज इज इनफ सर आपको 2 दिन में निचोड़ दे देंगे बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है सर Okay, great, great, great. Well, thank you for appreciating that, and thank you for be so natural. Okay. Uh, I'll show the offer letter also. You send me that offer letter. I was so happy when I saw your offer letter because it's also my achievement. My candidate got ऑब्वियसली selected. सर Yeah, ऑब्वियसली ऑब्वियसली was also did ऑब्वियसली hard work. Suddenly daily wake up on 6 o'clock and then prepare for the interview, the session, and then conduct session daily, daily, daily. So I also need to do preparation for that. And if any candidate like you got selected now, I also become so happy अरे for that. So thank you for giving me that opportunity to सर थैंक यू सो introduce मच टू you यू as a person who got selected.
by following my 7 days session. Okay, and I'll want to request you. I want to request you one thing, that please help the candidate who is having the issue, who want any job, who want any support in your company. If you find any candidate who wants support in job, so you just help them. Don't hesitate to help anyone who is looking for job as a fresher, as experience. If you have any job opportunity in your company, just share with me. I will share to the group, and also you can share and keep that information on your status, so most of the people get selected, and also just help the people. Yeah, absolutely. First of all, I will obviously share whatever comes to me, right? As well as सर एक चीज आपने भी कही है naukri.com, right? सो naukri.com से बहुत ऑफर आते हैं मेरे पास, और हम्म, naukri.com पे मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगा आप प्लीज अपना पोर्टल पे उस पे जाके लॉग इन करें और अपनी बहुत अच्छे से रिज्यूम बनाएं। सर ने yes, बाकायदा रिज्यूम का भी, सर मैंने आपका रिज्यूम वाला वीडियो भी देखा है, yes, आपने yes. जो बताया रिज्यूम के बारे में, हम्म, तो प्लीज वो रिज्यूम वाला वीडियो भी देखें और हम्म, जाकर के और उसी अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम बनाएं, तो आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, देखिए सर का है तो पूरा इंग्लिश में, पर मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश सही से नहीं भी आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप इससे समझ जाएंगे और सर को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला। very good, very good, very good. Very good. Thank you so much, Apurva, for joining the session and for sharing your experience. And all the best for your journey. Just going to start and be healthy, eat healthy. Okay, do some exercise. Okay, and work hard and get so many achievements in your future jobs and right now. Okay, thank you. थैंक यू सो मच सर, वी विल मेक कीप मेकिंग यू प्राउड, और जो भी मेरे पास और सक्सेस आएगी मैं जरूर आपको मैसेज में बताऊंगा, आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। Sure, sure, sure. I will definitely wait for that. यस सर, थैंक यू सो मच सर।